मेरा लैपटॉप टूट गया है। Hey guys, welcome to channel Kashmir Lust, and today हम आपको entertain करने वाले हैं because today we're gonna do unboxing of a great content creator laptop. So guys, before we begin the unboxing of this laptop, I would like to tell this story how did I purchase it. ये गंदी वाली हालत मेरे साथ बहुत बुरी हालत होगी, बिकमंगो वाली हालत होगी इसको परचेज करने के चक्कर में, because या तो आपको प्रोडक्ट directly it gets delivered to your home, that's easy, you pay online, you get delivered, you go to a shop, you get delivered, or second, you call up your friends, they receive it in different province, different state, then you back to them, oh bhai, when it's coming, they get pissed off. First I would like to thank Ralph, but I called the guy, he's been a brilliant friend of mine. I called him, he's always helpful, always like ready at your service. So thank you Ralph, you made this possible for me, and this unboxing video goes dedicated to you and Junaid Khan. First, bhaiya, these kinds of laptops which if you want to order online from Amazon and Flipkart do not get delivered in Kashmir, because I do not know, maybe the people are not purchasing these days high priced, and jo bhi yahan online mil raha hai, Amazon pe, Flipkart pe mil raha hai, they are just giving us shit. What? They're giving old processors like i7 4th generation, i7 3rd generation, they are not required, and they too एक डेढ़ लाख के laptops, gaming laptops जो बिल्कुल जिनमें graphics card 1660 का भी नहीं है, like this one has 2020 TX और TI, वो आप देख लेंगे, description में मैं दे दूंगा. But these kinds of new laptops are not getting delivered in Kashmir because of COVID or because of the situations as of now, because शायद sale नहीं हो रही है. Because content creator laptops are pretty, it can be 2 लाख 3 लाख भी होते हैं, कभी 1-1.5 लाख के भी होते हैं. तो 60 to 50,000 जो नॉर्मल एक परचेज करता है एक बंदा, ईमेल यूज़ करे, फेसबुक वीडियोस देखे, मूवीज़ के लिए, उसको 50 to 60 हज़ार में मिल जाता है. फिर 70 to 80 से कंटेंट क्रिएटर लैपटॉप स्टार्ट होता है. सो एनीवेज आई हैड टू परचेज इट थ्रू फ्लिपकार्ट. Flipkart delivered it to my friend's house at Delhi, Rauf Madangiri में. वहाँ से Rauf साहब ने, then he was thinking to deliver it to me. He was coming over to Kashmir, but he couldn't come. Then I had to call Junaid Khan. Junaid Khan called his friend who was working in Indigo Airlines or Go Air. So finally, उस साहबजादे के लिए भी thank you so much brother, you made it possible. So from there, it just got delivered. मर के 15 दिन में 10 दिन में मैं फ़ोन कॉल्स करते रहा and like because I was running, I had to upload vlogs अपलोड नहीं हो रहे थे, YouTube was dead. I was like, मैंने आप लोग गुस्सा करेंगे, मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ. So finally उसके बाद मैंने ये लैपटॉप जो ही सुबह दौड़ के गए स्कूटी पे उसके घर जिसने लाया था एयरपोर्ट से उसको जगाया बेचारे को. I'm sorry for that. I was like frustrated, man. I had to upload the vlog, and then this beauty came into my home, and thank you so much. Keep your love and support. चलिए आगे बढ़ते हैं. In Kashmir, if you have to purchase such laptops, they don't get delivered because ये लोग i7 4th generation बेच रहे हैं, ऐसे प्रोसेसर वाले कंप्यूटर बेच रहे हैं जो 2-2 लाख में, एंड जिनका नया ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, जिनके नए प्रोसेसर्स नहीं है. सो आई वुड अनबॉक्स दिस. उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा, स्पेसिफिकेशंस, एंड व्हाई आई चूज दिस कंटेंट क्रिएटर लैपटॉप. एंड आई कॉल दिस एज अ कंटेंट क्रिएटर लैपटॉप बिकॉज इसके अलावा लेना आप अच्छे भी ले सकते हो, बट दिस इज समथिंग विच इज गुड. एंड लेट्स बिगिन. इसको करते हैं टिल्ट. Alright, here we go. Whoa! Something is it. So basically ये वाली पैकिंग जो थी ये इनकी अपनी एक्सटर्नल पैकिंग थी. इसके ऊपर और एक बॉक्स था, तो वो बॉक्स हमने फ्लिपकार्ट का रिमूव कर दिया. उसके अंदर ये वाला कार्ट्रिज वाला बॉक्स है, एंड उसके अंदर व्हाट इज दिस मैन. Okay, here I've taken one thing out. Now let's see what is this. And इसके अंदर से ये निकला है. It's a booklet by Predator. Ooh. Now this is something that's called the charger box. So guys, there we go. So presenting the Predator. Getting these 3 things in the box, which are coming from the Acer side. Like first we're gonna have this Predator booklet. So it's like an envelope. So we will do one thing, we'll open the envelope. So in the envelope we have the
It's like a gaming thing which they have given. So guys, we're getting this envelope of Predator. This is the beautiful thing, man. You'll like it when every brand has its own importance, their own kind of a symbol. So this is it, and that's the reason we chose it. So this is envelope of Predator. Then you have this box, and then you have the main laptop in this one. So isko kholte hain. So let's open this. Oh, beautiful, man. So this is an kind of a booklet. It's a setup guide. It will guide you through the setup. So that's very much important. Now we have like kind of a quick guide. That's also a guide. I do not know what is this. ये बाद में खोलेंगे हम. No, गुलगुले. भैया मेरे को बहुत खुशी हो रही है, and I wish आप मेरी खुशी में शामिल हो. And now let's go with this thing. No. Okay, now we're getting this box. This is the box. So what will be in this box? इस box में हमें क्या मिलता है? I think this is charger. Okay, so here are we getting this charger. Yeah, it's a beautiful charger, guys. बहुत heavy लग रहा है. भाई obviously computer भी heavy है भाई. तो heavy तो लगेगा ही. So anyways, this is the charger. That's beautiful. Hang though. Now I have to tell you about the pros. It looks sexy, it looks awesome, because हर कोई content creator अपने अपने pros and cons बताएगा, but I don't want to discuss that. वो usage के बाद बताएंगे. फिलहाल unboxing है. So this is how it looks. Whoa, man! So what are you getting? This is the cover. Man, 144 Hz का refresh rate का screen. Sexiest keypad, man. So this does have a NVIDIA 2060 RTX GeForce का आपको graphics card मिलता है. Then you have 4th generation Aero Blade 3D technology. 144 Hz का 3ms high refresh rate screen. That is this screen. Symbols i7 है 9th generation का. Then you have HDMI. HDMI मिलता है आपको 2.0 port का. And Killer Double Shot Pro. You should search in the Google. You will get to know about the Killer Double Shot Pro. Then you have dual SSD. वो क्या होता है? एक तो इसमें हार्ड ड्राइव है. हार्ड ड्राइव अपनी 1 टेराबाइट की है, and 256 की अपनी एक solid state drive है. That is it. So I think I need to turn this on, right? Yes. So guys, the flashing has come on. Let's see the screen now. You can see the flash of these keypads. So now the branding comes up. Looks awesome. Basit is also doing some work. Basit को भी दिखाना है. Basit is actually handling the camera. So ये रहे Basit. So now let's see what happens up, because we have to go through the setup. So logo comes up, then there is like initializing. पहला boot हो रहा है. I hope this goes good. So guys, now what is coming region? आप कहाँ से हो? हमें ढूंढना पड़ेगा India, because there are trackpads. So we have to check for Iran, Ireland. I think India is upstairs, so we're gonna go India. Then we have to select yes. How to select yes? Enter मार दिया. So अब ये moment लेगा, just a moment. So is this the right keyboard layout? English India, will select the English India. Keyboard का layout select कर दिया, you can see. And there we go. Then want to add a second keyboard layout? नो स्किप कर देते हैं. मुझे अभी वो पता नहीं है वो क्या मसला है. स्किप कर देते हैं. सो इट विल टेक अ बिट ऑफ मोमेंट. सो इट विल ऑटोमेटिकली फर्स्ट सर्च फॉर योर 4G. सो मेरा आप देख सकते हैं कश्मीर लस्ट का 5G का कनेक्शन सिक्योर्ड है. सो कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर देते हैं 5G. हम डालते हैं इसको पासवर्ड के लिए मैं छुपाना पड़ेगा. सो गाइस, दिस इज डन. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इट सेज दैट इज कनेक्टेड. सो वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट. सो वी गोना क्लिक हियर एंड I think I have to go for next. So once we click on next it says something that we have some important setup to do. The flashing is still on. It did something, and again the Predator logo comes up. So let's see how it goes, how the desktop comes up. There are a lot of things to be done on this computer. So I'm sure the looks are pretty good, and I hope the hardware which has been put in it will make it much better. Because एक normal के लिए, एक normal content creator के लिए ये computer बहुत अच्छा है. Yes. So I'm hearing some Windows के साथ updates हो रही हैं, something like it. So because it shows here now. Let's see some what's new. And just for the moment, so getting a license, okay? In short, you'll need to select accept to use Windows. देखिए भाई accept कर लेते हैं. So it is automatically guiding you through the setup, I believe. I think the Windows online installations are happening. Type your email address or phone number.
Then follow the instructions to sign in. All I'll right. catch up with you once that's done. Oh god, that is very different. So now let's go with the next. Now it is not letting me to go for next. Then it's a valid email address. Plus का code select करना है. 91 किया and then you just have to register the device, I think. 808263826 the Microsoft account does not exist. So आपको पहले Microsoft का account डालना पड़ेगा, get a new one. ये भी मसला है, पहले आपको account create करना पड़ेगा because I don't think there's any option. You can use your own email address or we can help you create a new one. Alright, now we're gonna go for the password. ठीक है, करो. So guys, let's create the password first. Code on the phone, so we need to actually वो कोड यहाँ देना पड़ेगा. बासित बताएंगे. बासित भाई बताइए. 888 887. Sorry, 887. Is that the code? Yeah. ये क्या हो रहा है? Why can't I type 888? That's the code. So yeah, create a pin. So we're gonna create a pin. Obviously that's important. भाई pin तो करना पड़ेगा. So set up a pin. Create a pin to use passwords. Want to set up a pin? Want to set up a pin? What is this, man? Create a pin. Your account requires a Windows Hello pin. And Windows Hello pin makes sign in faster and more secure, unlike a password. So we need. Okay. So now we're gonna go for next. So it's linking your Android phone. And what is the code? You have to sign in. It's sign in, so we'll go for next. Don't worry. Nothing. Okay. उसके बाद we're almost done. Just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. Perfect. So she's helping you, man. क्या करोगे आप? अंधेरा कायम रहे. We're getting everything ready for you because that was very important. And everything you can see. Finally, we have our Predator running off. So we will download a lot of softwares on it. I have to check whether they have provided any kind of an antivirus or not, but we will do that up. So it's going to take a bit of time, and this was the unboxing. I hope आपको पसंद आए. इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम नए व्लॉग में आपको बताएंगे. फिलहाल अनबॉक्सिंग में that's quite good. Okay. So meanwhile we try to connect the internet. जो जियो का हमारे पास speed है वो 150 megabytes per second आ रहा है. Router is not installed in this room, guys. That's in a different room. Beast. There's a turbo mode in it. So let's start with the turbo. So these are the functions of Predator Sense. So lightning का option है आपके पास. CPU, GPU analysis है. There is static and dynamic. आप lighting profile में जाके अपना keyboard जो है ना आपका, this is what is happening. आप कौन सा mode रखना चाहते हैं. You can change the colors of keypads. Like this is the color which you're changing, and the kind of waves. Direction यहाँ से back and forth, left right to left. So this is the best thing which is in the laptop. Like everything is being built for your satisfaction. Overclocking है. So there's other features with fan control है. See, the fan control is the rotations per RPM जो आपका आ रहा है. Then you have game synchronization, app centers. So we'll get to know them in a different way. You can hear the noise. So this is a kind of turbo is on. So you can see. You can hear the noise here if I put the camera here. This is the reason it's called Beast. And that's what you have to do. You check this portion, यहाँ से काफी, you know what, you can hear this noise. The fans, like they're good. Propulsion technically. And then the logo. You will miss him. The best part about the logo, it also gets changed in RGB, like different colors. You can change the settings and do this. So guys, that was unboxing of Acer Helios 300 with a graphics card of 2020. So I hope I'm not the technical kind of a guy, but I'm going to give you a little bit of tidbits. The reason to purchase this because इसका next video आएगा जिसमें मैं आपको अच्छे सॉफ्टवेयर वीडियो एडिटिंग के जो है, फोटो एडिटिंग के, गेमिंग के जो भी अच्छे एप्लीकेशंस हैं वो इंस्टॉल करके दिखाऊंगा ये कितना क्विक है. एंड एक लॉजिकली हम लोग क्या करते हैं, वी ऑलवेज वॉच अदर व्लॉगर्स यूट्यूब अकाउंट्स, लाइक वी share the knowledge of technical aspect that they give us. Like you have a bunch of vloggers, but they are making it so complicated. एक लोकल इंसान परचेज नहीं कर पाता. उनको लगता है यार ये तो पता नहीं 2 लाख का 3 लाख का होगा. यार अब क्या हर कोई, अगर आप 60 से 70 हज़ार का भी डेस्कटॉप लाओगे उसमें आप अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड डालोगे, रैम डालोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास उतनी 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव नहीं है, 256 GB की हार्ड ड्राइव है, दैट इज ऑल्सो गोना वर्क. बट प्रोवाइडेड रैम आपको 8 GB से ज़्यादा चाहिए वीडियो एडिटिंग के लिए, और कम से कम एक अच्छा सा ग्राफिक्स कार्ड 1660 TX का ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, और अच्छा सा डिस्प्ले रिफ्रेश रेट के साथ स्क्रीन. अगर आप ज़्यादा स्क्रीन में जाओगे देन इट इज़ बेटर टू बाई मैकबुक बिकॉज 2-2.5 लाख का मिलेगा, उसमें स्क्रीन की भी अच्छी खासी होती है, इमेज इसमें भी अच्छा है. बट मतलब मेरे हिसाब से एक जनरल नीड के लिए, एडिटिंग के लिए, और काफ़ी सारा बिगिनर कंटेंट क्रिएटर लैपटॉप जो हैं
या कोई इतना रख सकता है कि यार मेरे को वीडियोस एडिट करने सीखना है एंड आई वांट टू प्रोसीड, एक बिगिनर के लिए बहुत अच्छा है. इट्स नॉट इवन अ बिगिनर, इट्स एन एडवांस कंटेंट क्रिएटर लैपटॉप. सो बेस्ट पार्ट, मुझे अभी इसका लुक बहुत पसंद आया. स्लीक है, मुझे लगा बहुत हैवी होगा एंड ब्रिलियंट, लुक्स कूल. बट कुछ चीज़ें मैं प्रोज एंड कॉन्स नए वीडियो में डिस्कस करूँगा, जहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कि एक महीने के बाद वो वीडियो भी अपलोड होगा कि एक मंथ की यूजेज के बाद एसर हीलियोस प्रीडेटर जो 300 है, जो मैंने फ्लिपकार्ट में परचेज किया था, एंड वुड बी गिवन प्रोज एंड कॉन्स, बिकॉज अभी प्रोज एंड कॉन्स बताना बहुत एक जाहिलानापन होगा. सो गाइस, कीप लविंग अवर चैनल्स, वी आर ट्राइंग टू शो एवरीथिंग, वुड ब्रिंग इन ट्रैवल टूरिस्ट रिएक्शंस, वो भी शेयर करें. और भाई प्लीज़ मेहरबानी करके ये बेल आइकन दबा दो. मैक्सिमम लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया, उस गरीब की तो मेहनत ज़ाया हो रही है, बिकॉज उनको व्लॉग्स अपडेट नहीं मिलता है कि उनको लगता है कि अभी कश्मीर लास्ट इज नॉट अपलोडिंग व्लॉग्स. सो बेल आइकन पे सिलेक्ट दबा के ना वहाँ ऑल नोटिफिकेशन सब दबा दो. सो रही बात इस लैपटॉप की, देखो सिंपल लफ्जों में बताऊंगा कि जो बंदा चाहता है कि लैपटॉप चाहिए एडिटिंग के लिए, लैपटॉप चाहिए कि मैं प्रीमियर प्रो यूज़ करूँ, फोटोशॉप यूज़ करूँ और अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर यूज़ करूँ, ये बसूड़ी में नहीं पढ़ना है. दिस हैक्टिकनेस विच अदर व्लॉगर्स हैव क्रिएटेड, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए. भाई सिंपल है, अगर आपके पास अच्छा खासा लैपटॉप है तो जिसमें रैम इतनी हो, कॉन्फ़िगरेशन अच्छी हो, तो तुम लोग आराम से एडिट कर लोगे. फिर जब माशाल्लाह तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे आ गए, तब तुम हायर एंड में रेजर में जाओ. आई थिंक रेजर इज़ द बेस्ट चॉइस. अगर मेरे पास पर्सनली पैसे होते, इफ आई वुड हैव हैड द मनी अराउंड अबाउट $2,500, लाइक लगभग 2-2.25 लाख रुपए, तो रेजर इज़ द ब्रांड. आई वुड नेवर गो फॉर मैक. दैट्स द रीज़न, बिकॉज रेजर आप परफेक्ट है. There are so guys, it's my opinion, it can be wrong, but to be very honest, I'm giving you something which is food for thought. This laptop, if you buy Acer mid-range laptops 1 लाख ऊपर, you will enjoy editing, you will run every number of softwares. जो आपका 1 घंटा 1 दिन लग जाता था ऑप्टिमाइज होने में फाइल्स पे, 500 MB 600 MB वीडियो पे जो आप बनाते हो 10 मिनट का वीडियो, उस पर एक दिन लग जाता था भाई ऑप्टिमाइज हो जा. कभी ट्रांजिशन नहीं लगते, कभी सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा है, एंड आई एम श्योर इस पे वो नहीं होगा, बिकॉज इस पे जो होने वाला वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा. एनीवेज, लॉट्स ऑफ लव, कीप प्रेसिंग द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल. अल्लाह हाफिज.